program MCA-new and the course name is MCS-226 Data Science and Big Data। ठीक है, तो अभी एग्जाम से पहले ये हम रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं फॉर दोज जो कि पूरा बुक पढ़ते हैं, ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट पर डायरेक्ट जाते हैं। ठीक है, तो मैं वैसी स्टूडेंट हूँ जो लाइक पूरा बुक पढ़ लेती हूँ एक बार, बट बुक को पढ़ना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स यूज़ होते हैं और बहुत बहुत बड़ा रहता है, बहुत सारे पेजेस है, तो कंप्लीट करना इट्स इम्पॉसिबल। ऊपर से उसको समझाने वाला कोई नहीं होता है, ठीक है, टीचर वगैरह। तो मैं अपना पढ़ाई ऐसे करती हूँ, मैं इग्नू का अपना, कि मैं पूरा ब्लॉक 1 का यूनिट 1 का निकालती हूँ और समराइज करती हूँ साथ में रियल लाइफ एग्जाम्पल को लेकर। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल मुझे हेल्प करता है कॉन्सेप्ट को समझने में और एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, और ये हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लिखे, क्योंकि अगर उसका मतलब समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा डेफिनेशन टेक्निकल वर्ड्स में आ जाएगा, तो बाकी मैं खुद से कर लूँगी। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाती बुक, ये देखो, ठीक है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4। ब्लॉक 1 में देखो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। ठीक है, इस तरह से पूरा ब्लॉक 4 तक है, यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4, 5, 6 करते करते। तो सेम ही चीज ये देखो, ब्लॉक 1 का यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4 करके मैंने पूरा ब्लॉक 4 यूनिट 16 तक का इस तरह से शॉर्ट एंड सिंपलेस्ट वे में समराइज करके डॉक्यूमेंटेशन बनाया है, जो मैं खुद पढ़ती हूँ एग्जाम से पहले, और मुझे टाइम मिलता है तो ही मैं प्रीवियस ईयर में जाती हूँ, पहले ही मैं प्रीवियस ईयर में नहीं पढ़ती हूँ। ठीक है, मुझे मतलब इतना भरोसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर पढ़ के गए और एग्जाम में वही आएगा। मेरे को पूरा बुक पढ़ना है, उसके बाद से जो क्वेश्चन आएगा वो मैं खुद करूंगी, और टाइम मिला तो प्रीवियस ईयर का देख लूंगी बस एग्जाम से पहले। तो चलो अगर इसमें देखें ब्लॉक 1 यूनिट 1 में क्या है, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, डेटा साइंस डील्स विद एनालिसिस, analyzing very large amount of data created by the internet, mobile phones, social media, videos, images, and company's database. This data is usually unstructured and difficult to understand. Data science help in collecting, cleaning, processing, and analyzing the data so that useful information can be obtained for decision making. So real life example, how will you remember this? Google Maps uses traffic data from user to show the fastest route and avoid traffic jam. ठीक है, डेटा साइंस का डेफिनेशन, data science is a multidisciplinary field that uses statistics, mathematics, programming, and domain knowledge to analyze data and generate useful knowledge of decision making. It helps in finding patterns and predicting future outcomes using past data. Real life example, online shopping websites recommended product based on your previous purchase and searches. Correct है? Now, next, advantages of data science in organization. Data science help organization in making better business decision, predicting future trends, detecting fraud, reducing cost, and improving customer satisfaction. It supports data-driven decisions making instead of guesswork. Now, real life example इसके लिए होगा, bank uses data science to detect fraudulent transactions by analyzing unusual spending patterns. Of types of data, structured data is organized in row and column and follows a fixed format. It is stored in databases and data warehouses. ठीक है, real life example, student record store in a college database with roll number, name and marks. फिर semi structure has some structured but not fixed format. It uses tags and key value pairs, जैसे कि JSON XML। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा में रहते हैं कीज एंड वैल्यूज, मतलब नेम इज अ की और प्रिया इज द वैल्यू फॉर दैट। तो वो इस तरह से रहता है JSON एंड XML की वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन में। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा का बात करें तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हैज नो फिक्स्ड फॉर्मेट एंड इंक्लूड्स टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोज एंड ऑडियो फाइल्स। तो रियल लाइफ एग्जांपल फॉर दिस, व्हाट्सएप मैसेज, यूट्यूब वीडियोज, इंस्टाग्राम पोस्ट, ऑल दीज। Data streams are data generated continuously over time. They can be structured or unstructured. ठीक है, data streams are data generated continuously over time. They can be structured or they can be unstructured. Real life example, weather sensors continuously sending temperature and humidity data. ठीक है, वेदर का जो सेंसर है वो कीप ऑन शेयरिंग एंड सेंडिंग टेम्परेचर्स एंड ह्यूमिडिटी अबाउट द वेदर. Statistical types of data.
Categorize data represent categories and groups and cannot be categories and groups and cannot be used for mathematical calculation. Real life example, gender, blood group and occupation. Nominal data क्या आ रहा, देखो categories data हो गया. अभी nominal data is a categorized data with no order. Nominal data with no order ऐसा करके याद रखना, जैसे male and female. Next, ordinal data is a categorized data with a specific order but not exact different. Real life example, grades like A, B, C and age group, blood group, that can be. Quantitative data is numerical data used for calculation like height, weight and salaries. Discrete data has fixed and countable values like number of students in class. Next, a continuous data can take any value within a range. Real life example, height and temperature. Measurement scales. Nominal scale is used for identification. Real life example like gender. Ordinal scale. Nominal scale. Ordinal scale shows ranking but no fixed difference. Real life example like grade of income categories. And there are few more, ये measurement scales के अंदर आएगा. Sampling is the process of selecting a small representative part of data from a large population. It saves time and cost and still provides useful results. Example, election surveys collect opinions from a small group of voters to predict result. Descriptive analysis. Descriptive analysis summarizes data using table, chart, mean, median and percentage. It does not explain reasons and relationships. Real life example, finding the average marks of a class and showing them using a bar chart. Exploratory data analysis. This is used to explore data and identify possible relationship between variables using graph and charts. It helps in understanding data before final analysis. फिर इसको real life example using box plots to compare the height of boys and girls. ठीक है, और देखो ये जो है inferential analysis, predictive analysis, common misconceptions of data analysis. ठीक है, common misconceptions of data analysis का क्या आ जाएगा, ये just real life example से हैं. Simpson's paradox occur when groups data gives different conclusions compared to ungrouped data. ठीक है, applications of data science. Data science is used in spam detection, fraud detection, product recommendation, healthcare, transport system and small cities. ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल भी इसका, स्मॉल ईमेल सर्विस ऑटोमेटिकली सेपरेटिंग स्पैम ईमेल्स फ्रॉम इम्पॉर्टेंट मेल्स. करेक्ट है. डेटा साइंस लाइफ साइकिल. The data science life cycle includes problems identification, data collection, data cleaning, descriptive analysis, model building, testing, deployment, and continuous improvement. Real life example is shopping app regularly improving its recommendation system using new customers data. According to the new customers का data कि वो उनको क्या चाहिए, what are their search history, they मतलब they make changes on their app or their product. Okay, ये था. तो वैसे ही यूनिट 2 में बात करें तो यूनिट 2 का भी मैंने ऐसे कलेक्ट करके रखा है टिल ब्लॉक 4 यूनिट 16. ठीक है, एडवांस एनालिसिस यूजिंग आर कुछ है उसके बारे में. उसके पहले भी एक ब्लॉक है जिसमें आर, डेटा एनालिसिस एंड आर एंड डेटा एनालिसिस यूजिंग आर. 14 में क्या है, डेटा interfacing and visualization of R something R basics of programming. ठीक है, and R programming is a statistical programming language used for data analysis and graphical representation. This is what R is. ठीक है, ये अगर पूरा पढ़ लिए एंड उसके बाद अगर एग्जाम से बहुत पहले पढ़ रहे हो दैट इज़ वेरी गुड कि अच्छा समझ में आएगा, एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मिलेगा अबाउट द चैप्टर, अबाउट द कोर्स, and you will be capable to write the brief answers by your own. Thanks for watching. If you need this PDF, you will get that on my description link, video's description. Okay.